Hello students, how are you all? I'm sure you all are doing perfect and enjoying your studies too. So children, let's begin with our next chapter, which is the parliamentary form of a government. Our learning objectives are types of democratic governments, need for a parliamentary form of government, the parliament, functions of the parliament. India is a democratic country. A democratic country is one in which its citizens participate in the decision-making process of the government. It is also characterized by the presence of social, political, and economic equality among citizens. India has adopted a parliamentary system of governance. तो आपको पता ही है कि इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पे लोगों को ये हक दिया जाता है, राइट दिया जाता है कि वो अपनी गवर्नमेंट, अपनी सरकार जो है वो चुने. Now, types of democratic governments. Democratic governments can be divided into two types: parliamentary form of government and presidential form of government. Parliamentary form of government. In a parliamentary form of government, the parliament is the supreme and it's represent the people. The legislature in the center is called parliament or the Sansad. For example, India has a parliamentary form of government. In this system, the Prime Minister is the real head of the government. She is the leader of the majority party in the parliament. The Prime Minister chooses the ministers from among the party to form the councils of ministers. The president is the nominal head of the state. People do not directly elect the president. The executive of or the council of ministers is a part of legislature or the parliament. This is because all of them are also the members of parliament. In this way, there is proper coordination between the legislature and the executive. The parliament has full control over the government. If the prime minister loses the majority in parliament, the government has to resign. तो इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पे आपको दो तरीके की गवर्नमेंट जो है देखने को मिल जाती है. पहली होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म एंड दूसरी होती है आपकी प्रेसिडेंशियल फॉर्म. पार्लियामेंट्री फॉर्म में जो इसका हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, जिसके पास पूरे राइट्स होते हैं कि वो अपने जो एमपीज वगैरह हैं उनको चुन सके और खुद की अपनी एक सरकार जो है वो बना सके. तो नेक्स्ट है आपका प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इन दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट द प्रेसिडेंट इज बोथ द रियल एंड नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट. देयर इज नो प्राइम मिनिस्टर इन द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. द प्रेसिडेंट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल. शी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर. That is, the executive is not a part of legislature. The parliament has no control over the president because she cannot easily be removed during her tenure. United States of America USA is an example of presidential form of government. तो ऐसी गवर्नमेंट है जिसका पूरा जो काम होता है वो प्रेसिडेंट ही देखता है. पूरा का पूरा जो नॉमिनल हेड होता है वो प्रेसिडेंट होता है और यहाँ पे कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं होता. प्रेसिडेंट को डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है लोगों के द्वारा, मतलब लोग जो हैं वो अपना प्रेसिडेंट चुनते हैं. और इसका बेस्ट एग्जांपल है यूएसए. Need for a parliamentary form of government. Under the British rules, the people of India lived in fear of government. People did not agree with many of the government's decisions, but they had to follow them. If they tried to criticize these decisions, they faced grave consequences. The nationalist freedom movement changed this situation. The nationalists began to criticize the British government. They felt that the government had to be sensitive to people's need and demands. That is why they supported the idea that all adults have a right to vote. जब इंडिया जो था वो ब्रिटिशर्स का गुलाम, तो ब्रिटिशर्स के ऐसे जो रूल्स वगैरह, लॉज वगैरह बने थे जो कि इंडिया के लोगों के द्वारा बिल्कुल भी पसंद नहीं किए गए थे, क्योंकि ये उनको क्या कर रहे थे, टॉर्चर कर रहे थे, तकलीफ दे रहे थे. India choose a parliamentary form of government for the following reason. This form of government is a true representative of the people. In this system, the government is responsible to the people through their representatives. However, this is not so in the presidential form of government. In a parliamentary system, the parliament enables citizens of India to participate in decision making and control the government. तो इंडिया में पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है इसकी वजह से जो लोग हैं उनको ये हक दिया जाता है कि वो अपनी गवर्नमेंट को क्या करें, चुने. Our leaders were already familiar with the British parliamentary system. In such government, a distinction is drawn between the head of the state and the head of the government. The head of the state may be a monarch or republican or an elected person. She is only the nominal head and perform only
ceremonial functions that too on the advice of the head of a government. In a parliamentary system, the government is subject to daily scrutiny of people through its representatives. It could be put out of the power any time it failed to deliver the goods. तो लोगों के पास ये हक है कि वो अपनी सरकार चुने, और अगर सरकार उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं करती, सही तरीके से काम नहीं करती, तो लोगों के पास ये राइट है कि वो अपनी सरकार को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. The Prime Minister is the real head of the state. She has to maintain a majority in House of the people, either singly or in combination with the other political parties. The Prime Minister and Council of Ministers are also collectively responsible to the same house. तो इसमें प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो हेड होता है, और बाकी सारे जो होते हैं वो उसके अंडर क्या करते हैं, काम करते हैं. In order to avoid conflicts between the executive and the legislature, the members of the Constituent Assembly opted for a parliamentary form of government. Now the parliament, the law-making body at the center, is called the parliament. The parliament is in our country, has immense powers because it is the representative of the people. The President, the Lok Sabha and the Rajya Sabha form of parliament in India. The Lok Sabha and the Rajya Sabha are two houses of the parliament. The Lok Sabha, the lower house of the parliament, is called the Lok Sabha or House of the People. It is called so because it consists of members who are directly elected by the people. तो लोक सभा के जो members होते हैं उनको directly चुना जाता है लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा. Composition, the maximum number of members in the Lok Sabha can be 552. तो इसमें maximum number जो है लोगों का, members का, वो 552 तक जाता है. आउट ऑफ दीज 530 आर इलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट स्टेट एंड 20 फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज. इसमें से भी जो 530 होते हैं वो डिफरेंट स्टेट से चुने जाते हैं, और जो 20 होते हैं वो यूनियन टेरिटरी से चुने जाते हैं. At present, the total strength of the Lok Sabha is 543. Each state and union territory is divided into various constituencies. Each constituency elects one member for the Lok Sabha. In addition, the President of India can nominate 2 members belonging to the Anglo-Indian community if it does not have adequate representation in the Lok Sabha. इसलिए आपने देखा भी होगा हर एक कंस्टिट्यूंसी में डिवाइड होता है, तो आपने जब इलेक्शंस वगैरह होते हैं तो वो एक मास में नहीं होते, हालांकि मास में होते हैं लेकिन अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग तरीके से होते हैं, और अलग अलग जगह पे अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव को खड़ा किया जाता है ताकि आप उनको वोट कर सकें. क्वालिफिकेशन फॉर इट्स मेंबर्स. अब हम जान लेते हैं मेंबर बनने के लिए लोकसभा का क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए. इन ऑर्डर टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द लोकसभा, अ पर्सन मस्ट हैव द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन. ही शी मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, जो बहुत ज़रूरी है, वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए. बाहर की कंट्री से किसी को भी ला करके आप रिप्रेजेंटेटिव नहीं बना सकते. ही शी शुड नॉट बी लेस देन 25 ईयर ऑफ एज, 25 साल तो उसकी ईयर होनी चाहिए. ही शी शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है. ही शी शुड नॉट बी मेंटली अनसाउंड और अ डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट. तो मेंटली क्या होना चाहिए, फिट होना चाहिए. ही शी शुड नॉट बी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, उस पर कोई केस ना चल रहा हो. ही शी नेम शुड बी इन द इलेक्टोरल रोल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, मतलब उसका वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, उसकी वोटर ID कार्ड जो होता है वो बना हुआ होना चाहिए. Election procedure, the whole country is divided into constituencies. The constituency is a territorial area from which a candidate is elected. ठीक है. एक constituency जो होती है territorial area होता है जिसमें से एक candidate को चुना जाता है. There is one representative elected from each constituency. All the citizens of India who have attained the age of 18 years and above have a right to vote. India has a universal adult franchise, which means that every adult has a right of franchise, i.e. right to vote. Votes are cast on the basis of a secret ballot. That is, when a voter casts her vote, nobody can know in whose favor she has given her vote. 18 साल की मिनिमम उम्र दी गई है. ये अलाउ किया गया है 18 साल से ऊपर के लोगों को कि वो वोट दे सकते हैं, क्योंकि उनमें इतनी समझ होती है, उनको पता होता है कि किस पार्टी को वोट देना चाहिए. Fact check from 2004 general elections. Electronic voting machines (EVMs) are used for voting. In electronic voting, one has to just press the button against the name of the candidate of her choice and the vote is cast. तो ईवीएम मशीन्स के बारे में आपने सुना होगा, जिसमें आपके इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है, वोटिंग मशीन ही होती है. आपको बस जाकर के क्या करना होता है, उस बटन को प्रेस करना होता है जो आपके कैंडिडेट के अगेंस्ट होता है, मतलब उसके साथ होता है. फिर जब आप उसको प्रेस कर लेते हो तो आपकी वोट जो है वो कास्ट हो जाती है.
The term of the Lok Sabha in 5 years from the date of its first meeting. This term can be extended by 1 year at the time of emergency, but it cannot be extended beyond 6 months after the emergency ends. The Lok Sabha can be dissolved even before its full term of 5 years. तो एक सरकार जो है 5 साल के लिए चुनी जाती है, अगर इमरजेंसी लग जाती है तो उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, और अगर वो ठीक से काम नहीं करती तो उसको 5 साल के अंदर भी डिमोलिश कर दिया जाता है, डिसॉल्व कर दिया जाता है. Presiding officers, the members of Lok Sabha, elect a speaker and a deputy speaker from among themselves. The speaker presides over the session of the Lok Sabha. He/she keeps the house in order. He/she may be a member of any political party, but once elected, he/she has to conduct his/her business impartially. In the absence of the speaker, the deputy speaker presides over the session. अब आपने अगर सेशंस देखे होंगे पार्लियामेंट के, तो यहाँ पे एक स्पीकर होता है, स्पीकर नहीं होता तो वहाँ पे डिप्यूटी स्पीकर जो है रखा जाता है. अब जैसे आपकी क्लास में मॉनिटर जो होता है वो माइंड करता है, तो उसी तरीके से पार्लियामेंट में स्पीकर जो होता है वो पूरा सिस्टम देखता है कि सुचारू रूप से चल रहा है या नहीं चल रहा है. The Rajya Sabha is the upper house of the parliament. It is also called the council of state. The states participate in the legislative activity at the center through this house. Composition: the maximum number of member of the Rajya Sabha can be 245. Out of these, 233 are representative of state and union territories, and 12 are nominated by the President of India. The nominated members are well known in the fields of literature, science and art, and social services. In order to give adequate representation to the historically marginalized communities, some seats are reserved in the parliament for SCs and STs. तो अब हम बात करते हैं राज्यसभा की, जहाँ पे आपकी सीट्स जो होती हैं वो 245 होती हैं, जिनमें से 233 जो होती हैं वो आपके स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं और दूसरे आपके यूनियन टेरिटरी से आते हैं. Qualification for its member: to become a member of the Rajya Sabha, a person should have the following qualification. अब इसके मेंबर बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ये भी हम जान लेते हैं. The person must be the citizen of India, सेम है. He/she should be less than 30 years of age. यहाँ वहाँ पे 25 थी, यहाँ पे क्या है, एज जो है वो 30 कर दी गई है. He/she should not be a proclaimed offender. He/she should not hold any office or profit under the government. He/she should not be bankrupt or mentally unsound. His/her name should be in the voter list of the state from which he/she is seeking election. Now, election procedure. Elections to Rajya Sabha are indirect. The members of Rajya Sabha are elected by the member of legislative assemblies of the state. The representatives of union territories where there are no assemblies are elected by special electoral provision. In addition, 12 members are nominated by the president. Term: the Rajya Sabha is a permanent body. It cannot be dissolved. 1/3 of its members retire after every 2 years. Every member has a 6-year terms. Presiding officers: a Vice President of India is the ex officio chairman of the Rajya Sabha. The members of Rajya Sabha also elected a deputy chairman from amongst themselves. तो इसके जो members होते हैं वो डायरेक्टली जो सिटीजन्स हैं उनके द्वारा नहीं चुने जाते हैं. इसमें प्रेसिडेंट जो है वो कुछ मेंबर्स को चुनता है, और इस जो सरकार है उसको आप डिमोलिश या डिसॉल्व नहीं कर सकते. Fact checked: a bill that is passed by both houses of Parliament can become a law only when the President of India gives his assent to it. In other words, no bill can become a law without the President's signature. तो हाउस जो पार्लियामेंट हाउस है इसमें बिल वगैरह पास किए जाते हैं, उनको रखा जाता है, हालांकि उसको पास जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाता है, फिर उसको क्या किया जाता है, पारित किया जाता है. Functions of the Parliament: the Parliament plays many significant role in our country. Its main functions are given below. Making law. Lawmaking is the most important function of the Parliament. It makes law on the variety of subjects that are under the jurisdiction of the central government. Selecting the executive: selecting the executive government from among themselves is an important function of the member of the Lok Sabha. The executive is a group of persons who work together to implement the laws made by Parliament. The Lok Sabha results show total number of MPs and members of Parliament belonging to each political party. To form a government, a political party must have a majority of MPs in the Lok Sabha. For example, as we know, the present Lok Sabha has 543 MPs. To have majority, a party should have at least 272 members, above half the total number of seats.
The Prime Minister is the leader of the majority of ruling party in the Lok Sabha. She further selects a minister from among the MPs who belong to her party to work with him to implement decisions passed in the parliament. These ministers take charge of various government ministers such as Ministry of Finance, Ministry of Home Affairs, etc. The largest among the parties that oppose the ruling party is called the opposition party. एक बार जब सरकार बन जाती है तो यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो अपने एमपीज वगैरह को चूज करता है और उनको ड्यूटीज वगैरह मिनिस्ट्रीज वगैरह बांटता है. जो दूसरी पार्टी होती है जो इलेक्शन नहीं जीती वो एज अ अपोजिशन पार्टी काम करती है. At times, no political party gets a majority in Lok Sabha. In such a case, different political parties of similar concerns make a temporary alliance to form a government. Such type of government is known as coalition government. In other words, a coalition government refers to an alliance formed by political parties after election when no party is able to get adequate seats to form the गवर्नमेंट. कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पार्टी जो होती है वो जीत नहीं पाती तो वो एक गठबंधन की सरकार जो है वो बनाती है. Guiding the government, the parliament exercise control over the minister and their work through various means such as questions. The parliament while in session begins with a question hour. A member of parliament can ask question from any minister about his department. Through these questions, the members keep a check on the functioning of various departments. By asking question, the government is alerted to its shortcomings. The Prime Minister and his minister are responsible to the Parliament for their work. The Lok Sabha can remove them by passing a no कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट देम. अब क्या होता है कि ये जब अपना सरकार चला रही होती है तो इनसे इनके कामों के बारे में पूछा जाता है, क्वेश्चन वगैरह किए जाते हैं. Controlling the government's finance, the parliament controls the income and expenditure of the government. The government receives money through various taxes. It spends these money on various welfare programs for the people. The income and expenditures are shown in the budget that is prepared every year by the government. This budget is approved by the parliament. Thus, without the parliament's sanction, the government can neither impose any tax nor can spend any amount. अब पार्लियामेंट जो होती है इनकम और एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल करती है गवर्नमेंट के. गवर्नमेंट जो होती है वो मनी रिसीव करती है थ्रू टैक्सेस, मतलब हम लोग जो टैक्स पे करते हैं उसके थ्रू गवर्नमेंट को पैसा जाता है और ये पैसा जो है ये लोगों के वेलफेयर के लिए यूज़ किया जाता है. जैसे आपके लिए सड़कें बनाई जाती हैं, पार्क वगैरह बनाए जाते हैं, स्कूल वगैरह बनाए जाते हैं, ये सरकार बनाती है और ये जो टैक्स आप पे करते हो उसी से ही बनता है. तो ये सब एक्सपेंसेस जो है वो एक सरकार को दिखाना पड़ता है पार्लियामेंट में. Providing information to the people through questions, MPs provide information to the people about the working of the government. The government also knows the opinion of the people through their representatives in the parliament. The government gets valuable feedback through members of the parliament. Removing high officials, the parliament can impeach and remove the president of India and vice president of India. It can also recommend the removal of judges of the Supreme Court and high courts. तो पार्लियामेंट जो है उसको ये अथॉरिटी मिली होती है कि वो प्रेसिडेंट को या वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकता है. साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको भी वो रिमूव कर सकता है अगर वो सही तरीके से जजमेंट वगैरह नहीं करते या कुछ भी अपने काम में वो हेरा फेरी वगैरह करते हैं. तो अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, द पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन जनरली एंड अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड 2/3 majority of 2 houses of parliament. Now keywords: legislature, law-making body; parliamentary government, a system of government having the real executive power vested in a cabinet composed of members of the legislature who are individually and collectively responsible to the legislature. Universal adult franchise: every citizen of India over 18 years of age, irrespective of gender, caste, religion or race, is eligible to vote. Bill, the draft of a proposal law. Points to know: democratic governments can be divided into two types, a parliamentary form of government and presidential form of government. In a parliamentary form of government, the parliament is the supreme and represent the people. The legislature in the center is called the parliament or the Sansad. In a presidential form of government, the president is both the real and nominal head of the state. The president is directly elected by the people in the presidential form of government. The parliamentary form of government is truly responsible to the people. In this system, the government is responsible to the people through their representatives. The President, the Lok Sabha and Rajya Sabha form the parliament in India. The lower house of the parliament is called the Lok Sabha and the House of People. The Rajya Sabha is the upper house of the parliament. The state participate in legislative activity at the center through
the house. A bill that both the houses of parliament have passed can become a law only when the president of India gives his her approval to it. तो इस चैप्टर में हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा। पार्लियामेंट्री फॉर्म में जो नागरिक होते हैं देश के वो सरकार चुनते हैं और प्रेसिडेंशियल फॉर्म में हालांकि वही गवर्नमेंट ही चुनी जाती है नागरिकों के द्वारा, लेकिन ये डायरेक्ट होता है, ठीक है। इसमें जो आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है इसमें आपके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो डायरेक्टली सरकार या दूसरे लोगों के द्वारा नहीं चुने जाते, बल्कि इसमें कुछ MPs वगैरह होते हैं वो इन्वॉल्व करके एक टीम बिठाते हैं जिनके द्वारा ये जो पार्लियामेंट है या ये जो प्रेसिडेंट्स हैं वो चुने जाते हैं। So children, I hope you understood the chapter very well. Now you will revise the chapter and practice the given exercise to understand the chapter thoroughly.